Good morning students, welcome to Commerce Campus Odisha. Today we'll start with the most important chapter of companies law, that is directors. Directors ro jetiki bi se edi portion kahichi ta bhitru most important portion we are writing it down. Then after this we are solving some question bank. ठीक अछि? तो further classes रे question bank गुडा को discuss हबो, but presently जहां भी हमको provisions दरकार directors पई सेडा में लिखिबो. Clear? Okay. First लेखा underline करो. Section 234. The first word itself is important. Co-section under a companies act co-section under a director define hechi. Now section number 2 subsection 34. Director to mean a director appointed to a board of the company. तो companies act कौन दोची? Companies act वाले बेकरिया कौन definition गुड़ा को केले दे पारियानी. हाँ, board of director जे appoint हेची सी हो जे director. इसे को board of director के माने एबे जदी गुटे लोक आछि परमपुर को नुआ नुआ रे ताको कहयो कि ए जिंसडा कोडी मिले ना कहयो गणेश मार्केट रे मिले गणेश मार्केट कोड अछि ना बड़ बाजार अछि बड़ बाजार कोड अछि परमपुर रे अछि बस हिंदी कथा जा कहयो के कंपनी सा बुझि पाल गंजाम लोक बस पूरा क्लैरिटी पड़ा आसिला इंडिया रे ग्रेट बस मिल्की में क्या लिख सको चंदा पड़े है ना तो अंडरलाइन करो डायरेक्टर हैज टू मीन अ डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी तो बोर्ड ऑफ द कंपनी भीतर जे भी अछि ताको हमें कोन कहया डायरेक्टर कहया तो हमर कोन डेफिनेशन ता एतिकी कहि दिछ अंडर द स्कीम ऑफ कंपनीज एक्ट द कंपनी itself and its directors or the board of directors are primary agents of the company. Please underline primary agents of the company. कौन निजे निजे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हे पर डिस्कस करछ नै कोन हबो गुड दिन मु बुझु छी बट एबे डिस्कस कर प्राइमरी एजेंट्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टर्स आर आल्सो नोन एज प्राइमरी एजेंट्स ऑफ द कंपनी काहे कि प्राइमरी एजेंट्स को चंदी एजेंट्स रो काम हां तो कंपनी को प्रिंसिपल मानिले ता बिहाफ रे जे तो डायरेक्टर माने काम करचंदी तो वी आर रेफरिंग देम एज प्राइमरी एजेंट्स बुझि पालो the companies act specifies where the company itself is to act both as principal and agent and where the board of directors is to act on its behalf in respect of the properties and assets of the company the directors or the board of directors act as trustees तो आउ जिंस कोन कहला एजेंट हिसाब रे काम करियो ट्रस्टी हिसाब रे काम करियो ट्रस्टी माने कोन ट्रस्टी हां जो ट्रस्टेबल नहीं ट्रस्टेबल जे ट्रस्टी माने कोन ताहातर केते काम दिया है हां पार्शियली ठीक अछि देखो एजेंट रो काम कोन से रिप्रेजेंट करियो ता बिहाफ रे ट्रस्टी रो काम कोन ठीक कहछ कोन कहछ बस बुझिला ना माने ता हाथ रे किछि जिंस दिया होबो कोन को पर्सपेक्टिव रे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव रे बुझछ ना बेसिक वर्ड ता एडा तो ट्रस्टी हो एजेंट हो प्रिंसिपल हो सेडा का ऊपर डिपेंड करछि ना डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रो से कंपनी रे किमिति इंपोर्टेंस अछि सेडा हमर कोन डिसाइड करूछ therefore the directors have different attributes in relation to the company depending upon the facts of each case मु कोन कहली कंपनी रो जहां भी सिचुएशन अछि केमिति क्राइटेरिया से माने फेस करचंदी सेही जिंस को धरि के कोन हबो हमर जहां भी डायरेक्टर्स रो रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी ना डिस्कस होई पारे इज इट क्लियर बुझि पालो तो एडी फर्स्ट लेखा number of directors section 149(1) number of directors dairy milk na directors hala every company shall have every company shall have board of directors every company shall have board of directors
Every company shall have board of directors consisting of individuals as directors. Every company shall have board of directors consisting of individuals as directors. बुझी पारलो? Please underline the word individuals. के रही परिबो खाली इंडिविजुअल्स रही पारे गोटे कंपनी आउटे कंपनी रो केबेले डायरेक्टर हेई पारिबोनी बुझी पारला गोटे लोकल अथॉरिटी केबेले तार डायरेक्टर हेई पारियोनी गोटे मनुष्य गोटे ह्यूमन बीइंग आका हेई पारिबो तापरे इनी करो तीनटा फर्स्ट लेखो प्राइवेट कंपनी public company, public company and OPC. Subbuja cases रे maximum directors is 15. Voice to clear अच्छी ग्रुप रे रिप्लाई करो ओके लिखिलो एतिकी एडा होचे हमर कोन प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी एंड ओपीसी तापर लेखा इंपोर्टेंट पॉइंट एडा there is no minimum there is no minimum and no maximum there is no minimum and no maximum number of directors required for a section 8 company there is no minimum and no maximum number of directors required for a section 8 company एडा होचे सबटू मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि तुमको टेक्स्ट बुक रे अवेलेबल नाही and there is a most probability of getting a question from it जेतु देखो हमरो से कंटिन्यूटी रे सेक्शन 8 विषय हमें बहुत किछि जिंस पढलु से कोन सेटे मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं मैक्सिमम रिक्वायरमेंट नहीं तो कोन से जत्ते लोक लेले अपॉइंट करि पारियो एज डायरेक्ट कोन पे रिक्वायरमेंट एटे से रखिनी कोन पे रखिनी देखो इंटरैक्ट करो को तमे चाहेले भाबुछो कहि पारिबो डायरेक्टर्स रो लिमिटेशन न रखिबार रीजन कोन हे पारिबो वेरी गुड प्रॉफिट मोटिव रे काम करले हमें लिमिटेशन दा रखिया काहे कि जे तमे लिमिटेशन न रखली से मन इच्छा जदी डायरेक्टर्स को रखिबो तो तांको थ्रू रे कोन करियो तांको को सैलरी देला आले तांको प्रॉफिट टा बांटी देबे पैसा उडा तो खाइ देबे सब जिंस हबो बट सेक्शन 8 कंपनी कोन होली गुटे नॉन प्रॉफिट इंटेंशन रे जेतु चालू छी तो कोन सेडा को डायरेक्टर्स के बेले इंटेंशन टा से माने रखना ठीक अछि आगे डायरेक्टर न रखले हबो बट गुटे डायरेक्टर से मेंशन करछि रेसिडेंट डायरेक्टर देयर मस्ट बी अ रेसिडेंट डायरेक्टर नो मिनिमम रिक्वायरमेंट कहछि से बुझिला ना नो मिनिमम रिक्वायरमेंट बट सेक्शन 8 कंपनी हो को कंपनी हो डायरेक्टर्स नथले हबो कि बुझि पाला ना एबे हमको एडी लिखाइ छी कि प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करिया को मिनिमम 2 डायरेक्टर दरकार पब्लिक पे 3 डायरेक्टर दरकार ओपीसी पे 1 जण दरकार माने एति कि थिले कंपनी स्टार्ट हे पारे तो सी सेक्शन 8 रे कोन कोर्स जानछ ना जदी जण भी अछन स्टार्ट करि पारियो
तीन जन अच्छा स्टार्ट कर बुझला कि नथिले स्टार्ट कर सिमती पर बट डायरेक्टर्स न थाई किसी जिनस चलो बट गोटे जिनस से मेंशन कर लेखा एवरी सेक्शन 8 कंपनी इनिशियल स्टेज रे से स्टार्ट करियो एडा केतोळ जानछ ना इनिशियल स्टेज रे अरे बाप रे डिजाइन हेला सब कोन हैला इनिशियल स्टेज माने कोन स्टार्ट हैला आळो बट एवरी सेक्शन 8 कंपनी every section 8 company every section 8 company must have every section 8 company must have at least one resident director must have at least one resident director बुझी पालो ए भितरे केतरा पॉइंट अछि मु कहबी सेक्शन 8 कंपनी मस्ट हैव at least one resident director से कहछ तो मु सेडा इनिशियल स्टेज कोन पे लिखली जानछ ना जतरो स्टार्ट करबो सेतलो के नथिले भी चलियो बट जतलो से कंपनीडा बॉडी की जिवो तो वन रेसिडेंट डायरेक्टर तो दरकार एडा कोन पे कुआइछि ना गुट्टे भी डायरेक्टर जदी इंडिया माने बिलोंग करी कि नथिबो फॉरेन रा सब थिबे तो हमें किन विश्वास करिया कि से एड रो जहां भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हेल्प करियो कहली विश्वास होबनी का मध्य सेडो से करि पारियो बट एटलीस्ट जणे थिला आगा वी कैन बिलीव दैट दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग आ गुटे जिंस कोन अछि एनुअल स्टेटमेंट्स फाइल करियर अछि तो जिंसर डाउट अछि ले कहले गवर्नमेंट आसे कि ताको क्वेश्चन करि पारियर अछि दैट्स व्हाई कोन ताको गुटे रेसिडेंट डायरेक्टर रहिबार बाध्य बुझि पालो नेक्स्ट लेखा a minimum of two directors is required if the section 8 company wants to be incorporated as private limited company जदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हेबाबू चाहूची सेक्शन 8 कंपनी तो इट मस्ट हैव टू डायरेक्टर्स अगेन काहेकि प्राइवेट कंपनी हो पब्लिक कंपनी हो को टाइप ऑफ कंपनी भी जदि सेमानक कैटेगरी भितर आसिया चाहूची तो सेमानक क्राइटेरिया फॉलो करे सेम केस रे जदि पब्लिक ही थानाले तीनटा डायरेक्टर दर बुझी पाला कांसेप्ट तो तीनटा कंट्राडिक्टरी जिंस गुठथरे कुआइछ देखो फर्स्ट रे से कहला कि रिक्वायरमेंट्स नाही तो को स्टेज रे रिक्वायरमेंट नाही इनिशियल स्टेज रे जदि पर से कहूची कि जणे एटलीस्ट जणे रेसिडेंट डायरेक्टर दरकार अछि तो को स्टेज रे फंक्शनिंग स्टेज रे माने जेतोळे जे से कंपनी अछि सेतोळे जे तापर से कोन कहूछ जदि ताको इच्छा हला पब्लिक की प्राइवेट कन्वर्ट करिया पई तो को क्राइटेरिया टू डायरेक्टर्स नाउ थ्री डायरेक्टर्स क्लियर बुझिला एग्जाम रे जेतिकी भी हटके क्वेश्चंस आसी पारिबो एवरी प्रोविजन वी आर डिस्कसिंग ठीक अछि देन लेखा नेक्स्ट provided that एतिकी तो सरला हमरा मिनिमम केस रे तापर इंदी लेखो provided that any company provided that any company may appoint more than 15 directors by passing special resolution in general meeting
स्पेशल रेजोल्यूशन माने केते परसेंटेज ऑफ वोट्स परसेंटेज 75% बुझी पालो मन रहा तो साइमल्टेनियसली कौन पे कहूची ना सेडी सेडी जदी दरकार आली कहले लिखि पारियो तो हैला तो से कौन कहूची जब मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट से जहां भी कहि देला तो किए ले 15 पार कर पारियो नेले नै जदी 15 रु अधिक करियर अछि कहले कोन ताको कोन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करियर अछि इन जनरल मीटिंग बुझी पालो नेक्स्ट पॉइंट लेखो section 149(1) section 149(1) that is women director the following type of companies 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 shall appoint at least one woman director shall appoint at least one woman director तो को टाइप ऑफ कंपनीज अपॉइंट करि परियो फर्स्ट थिंग होची every listed company every listed company माने कोडा who shares are ट्रांसफरेबल नहीं लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज बुझी पाला जार शेयर्स गुडा को स्टॉक एक्सचेंज रे लिस्ट हे कि अछि सेडा कोन हमरो लिस्टेड कंपनी every other public company having every other public company every other public company having what तीन जिनसा paid up share capital greater than is equal to 100 crores turnover greater than is equal to 300 crores ए माने कोन बाध्य होइगिरी अपॉइंट करियर अछि कितने मस्त चारटा पेज रे सॉरी दीची आ केते क्वेश्चन से दोच देखिजो के स्कैनर द डायरेक्टर्स रो स्पेशली देखिजो कौन दोचंदी बुझिनी कौन एडा होची कोन हमरो वुमेन डायरेक्टर लेखो the woman director has to be appointed within 6 months from the date of incorporation
date of incorporation, date of incorporation. Start हेला रंग कौन लेखुनी पूरा देखना within 6 months from date of incorporation, 6 months from date of incorporation. ता तोड़ा लेखा vacancy, vacancy any vacancy shall be, any vacancy, any vacancy shall be filled within, any vacancy shall be filled by board within immediate next board meeting, immediate next board meeting, immediate next board meeting, immediate next board meeting or immediate next board meeting or 3 months from 3 months from the date of vacancy, 3 months from the date of vacancy, whichever is later, whichever is later, immediate next board meeting or 3 months from the date of vacancy, whichever is later. बुझिपाल क्लियर or not? तो जदि वैकेंसी हैला 15 मार्च ठीक अछि आवर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग अछि केबे 28 सेप्टेम्बर तो केबे भीतर हमको अपॉइंट करार अछि देखि कर पारियो हां देखो से कोन कहै छी इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग केबे अछि 28 सेप्टेम्बर आ 3 months from vacancy कोन 15 मार्च टू हाँ मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, मई टू जून तो एटा कोन दिन हबो 15 जून तो केबे अपॉइंट करे अछि केबे भीतर whichever is कोन कहै छी से लेटर तो कोडा 28 वेरी गुड 28 सेप्टेम्बर बुझिला ना बुझिला ना सही पड़छ की सही पड़छ टिके उठी देख ना अच्छा ठीक अछि आउडी क्वेश्चन दोछ सेति पे मो क्वेश्चन दोछि तमे तमे भीतर नै बाहर कथा हे पारियो तम पचर परियो को डायरेक्टर ता को गार कोन जहां ले पचर परियो बस सोयर नै जो भी करो सोना नहीं है हैला नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग अछि देखो समस्त क्वेश्चन एटा बोर्ड मीटिंग अछि केबे 15 अगस्त वैकेंसी हैला 15 मार्च तो केबे भितरे हमको अपॉइंट करियार अछि केबे भितरे वुमेन डायरेक्टर को रीअपॉइंट करियार अछि फर्स्ट एडा तो एरिया में लिखे कोन 15 अगस्त एडा 15 मई मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मई, मई टू को आंसर 15 अगस्त भितरे ताकू अपॉइंट करे whichever is later बुझा पड़छ तो सेटा बुझा पड़छ जा एबे बोलूना कोन वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करियो वुमेन डायरेक्टर कंपनी रा रे हमर नहीं कते जल्दी अछि पूरा तापर लिखो रेसिडेंट डायरेक्टर देखो टाइप्स ऑफ डायरेक्टर रो जोडा इंपोर्टेंट सेडा खाली लेखौची कोन हला को कंपनी रो डायरेक्टर होबो कथा होछ
को कंपनी रो परफेक्ट आंसर सेक्शन 149(3) सेक्शन 149(3) रेसिडेंट डायरेक्टर every company किछि डाउट अछि कार मेंशन करि परियो ऑनलाइन स्टूडेंट्स every company shall have at least one resident director shall have at least one resident director who resides in India for at least 182 days in previous calendar year एटा कोन कंपनी लिमिटेशन अछि कि नाही सब प्रकार कंपनी को गोटे रेसिडेंट डायरेक्टर रहिबार बाध्य बुझि पाछ गोटे एरिया डायरेक्टरटा रहिबार बाध्य तापरे अच्छा तापरे एडी आसो टेक्स्ट बुक रे कोन देछि ता टिके टिके हमें देखि कि ताको हिंट करि कि पढिबा बुझिला ना टाइप्स ऑफ डायरेक्टर रो गुथरे क्वेश्चन आसिला वुमेन डायरेक्टर रो हैला गुथरे वुमेन डायरेक्टर रो एंड गुथरे से जहा भी एप्लीकेबिलिटी रो धरी क्वेश्चन आसिला ता हमें लिखि देनु टाइप्स ऑफ डायरेक्टर बहुत प्रकार डायरेक्टर अछंती तमे जानथिबो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अछंती तांकर भी जहा भी ये अछि सेटा बहुत बड़ तो हमें कोन जति कि इंपोर्टेंट सेटा पढुछु अगेन मते क्वेश्चन पछरे सब जिंस कोन पे एलाबोरेट करछ बिकॉज़ सब जिंस इंपोर्टेंट आगे पढा अछि हां सीधे गारे ए देख रे पड़ेगा चार कोने ने कोन हां तो अंडरलाइन करियो तो योर फेवरेट काम तो कर similarly in case of association or other bodies registered as companies under section 8 of the companies act the members of the executive committee or the governing body are directors for the purpose of act तो अंडरलाइन करो सेक्शन 8 कंपनी रो मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी और द गवर्निंग बॉडी members of the executive committee or governing body are known as what directors A manager or any other managerial personnel is however not a director as was held by the Andhra Pradesh High Court तो एडा इंपोर्टेंट मार्क करो दिस कैन बी आस्क्ड एज अ केस लॉ सो कौन कोचे मैनेजर और मैनेजरियल पर्सनल बुझी पाछ मैनेजर और डायरेक्टर भितरे कोन डिफरेंस अछि समस्त गुटे गुटे पॉइंट कहर अछि मैनेजिंग डायरेक्टर नाइ मामा मैनेजर और डायरेक्टर भितरे कोन डिफरेंस अछि कॉम्बिनेशन तरकारी बनोतु आलू तरकारी ना पोटल डाली करे सोचे आलू पोटल कोन एडा हां तो ना लाज ना कोन डायरेक्टर करियो ओ ग्रेट मैनेजर मैनेज करियो डायरेक्टर कोन करियो डायरेक्ट करियो और प्रोड्यूसर कोन करियो पैसा दो बस कोन कहउछो कोन अछि एम रे स्टार्ट अछि और डी रे स्टार्ट अछि ग्रेट माने समस्त गुटे गुटे पॉइंट पछने इन दिन से जा कहियो ना ना अपॉइंटमेंट खाली नहीं एक्चुअली अपॉइंटमेंट रो कथा एडी आसेनी कोन पहले कहले इवन दे आर अपॉइंटेड बाय समवन बुझला ना हां डायरेक्टर प्रॉफिट मोटिव रे काम करे मैनेजर सैलरी इंटेंशन सेडा गुटे पॉइंट हे परियो बस देखिलो डायरेक्टर जी कोछि से टॉप लेवल मैनेजमेंट रे डिसीजन नबो सेडा इंप्लीमेंट करिए के मैनेजर जाबो
आ डायरेक्टर काम करियो प्रॉफिट इंटेंशन रे प्रॉफिट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर कोन खाली ता सैलरी इंटेंशन रे से काम करियो तार जहां भी स्कोप अछि लिमिटेड टू द डिपार्टमेंट ही इज हैंडलिंग बुझि पाछो मैनेजर काम अरे एतेले तांको काम करिया करते मैनेजर काम दियो नि एबे मैनेजर काम दियो नि इंदी पूरा ओडिसा अगर आमे इंदी ताको ये कहछो इंदी कहल मैनेजर भल लोक डायरेक्टर खराब लोक इंदी पॉइंट्स नाही आ कोन कहि पारियो नेक्स्ट हां गोटे कहि देली ठीक पॉइंट तमे तीन चारटा कहलो गोटे पॉइंट ठीक हैला तो यू आर ट्राइंग ट्राई कोन सिंदे ए को मैनेजिंग डायरेक्टर रो मीनिंग कोन सॉर्ट ऑफ सी में दियागा से लॉ कहइबो ये इंप्लीमेंट करियो बस मैनेजर द स्कोप इज लिमिटेड टू द डिपार्टमेंट ही इज हैंडलिंग और डायरेक्टर कोन तार स्कोप अधिक जहाले एक्सटेंड करियो तो मैनेजर और डायरेक्टर एतिक डिफरेंस अछि तो एतिक जिंस हमें नीचे जानलो तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कोन कहला हमको देखो से कोची मैनेजर और एनी अदर मैनेजरियल पर्सनल कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ डायरेक्टर केबे भी से डायरेक्टर ही पारिबोनी अनलेस एंड अनटिल से कोन मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर रा काम कोन जानछ ना डायरेक्टर्स रा भी केते प्रकार डायरेक्टर्स अछन हमें पढलु वुमेन डायरेक्टर रेसिडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ कोन कोन कॉमन डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर सेडा तो कहली बुझला ना मैनेजिंग डायरेक्टर रा काम होची केति की भी एक्टिविटीज होची सब किंदी कोऑर्डिनेट करियो किंदी मैनेज करियो सेडा देखो बुझला ना तो डिफरेंस इनकी भी है पर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड डायरेक्टर रो डिफरेंस तो मैं जेंदी कहलो डायरेक्टर कैन बी ऑफ दीस मेनी टाइप्स बट मैनेजिंग डायरेक्टर रो काम कोन स्पेसिफिकली गुड ऑब्जेक्ट को धरि तो हाई कोर्ट हमर कोन कहला मैनेजर किबा मैनेजरियल पर्सनल को केबे भी हमें कोन डायरेक्टर ट्रीट करि पारे बुझले ए पॉइंटटा का डाउट अछि तापर देखो से कहूची ऑफिसर 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 रो जिंसडा आसी तो ऑफिसर माने कोन साना साना पिल्ला जाती एलकेजी पढ़ुथे से माने जे पचले तम पापा कोन करछन हम पापा ऑफिसर बुझिला तो देखो हम पापा ऑफिस जाउछन तो को ऑफिस जाउछन बुझिला ना कॉलेज ऑफिस भी हे परयो कोन म्युनिसिपलिटी ऑफिस भी हे परयो जोडा ना ऑफिसर ना डायरेक्टर जे कंपनी जाउछ सीएल ऑफिसर हे परयो पुलिस जाउछ सीएल ऑफिसर हे परयो तो ऑफिसर हैज अ लार्जेस्ट स्कोप ऑफिसर भीतर आछे हमर डायरेक्टर रो कांसेप्ट एडा बुझो ऑफिसर भीतर आछे हमर डायरेक्टर रो कांसेप्ट includes a director as well as any person under whose directions or instructions the board or any one or more of the directors are accustomed to act माने ऑफिसर माने एमती गुटे लोक जे की कोन सुपरवाइज करे आ डायरेक्शंस दबो कि तू एमती एमती करे कहिरी जा पाखरे अथॉरिटी अछि आ सिए कहले बाकी समस्त कोन ता कथा को मानि की रहय अछि तो ऑफिसर भितरे डायरेक्टर्स भी पढोचनी मैनेजर्स भी पढोचनी समस्त तो एलकेजी पिला ने जहां भी कहउचनी सेटा सत्य कथा तार पापा मध्ये ऑफिसर हे पारे अल्टीमेटली कंक्लूजन हमर तो देखो से कौन कहउची only an individual can be appointed as director हमें पॉइंट ऑलरेडी लिखिलो no body corporate association firm can be appointed as director of the company केएलएल अपॉइंट हे पारिबोनी तापर देखो the duties and responsibilities of the directors stipulated by the Indian Companies Act of 2013 has been laid down under section 166 among other provisions. The duties and liabilities which encourage and promote the sincerest investment of the best efforts of directors in the efficient and prudent corporate management in providing elegant and swift resolutions. तो एटा किन लाउचे हमरो जो गुटे नुआ स्पा जति खुलिले किन गुटे वर्ड जा यूज करना swift elegant हाँ glamorous stunning देखले this is the power of interaction जहाँ भी जति कोई जिया लेकले कोई जाउ तो अल्टीमेटली से कोन कहउछ रे जहाँ भी तार ड्यूटीज और लायबिलिटीज अछि सेडा इमिति भाबे डिजाइन करर अछि सब डायरेक्टर रो जेमेदि कि कोन प्रूडेंट कॉर्पोरेट मैनेजमेंट हबो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट प्रूडेंटली हबो माने जिमति जिमति डिसाइड हेछि जिमति आगर गुटे कंपनी रे होथिला से हिसाब रे हबो as sincerely as that then कोन कहउछि बेस्ट एफर्ट्स देबे से माने then से कहउछि swift resolution of please underline swift resolution of various business related issues underline करो रे
Swift resolution of various business related issues. आखी खुली की सोई पड़ सेडी करियो ना था एडो नहीं कर दो swift resolution of various business related issues से तो very good girl तो से कौन चाहूची ना जहां भी मो business related issues अच्छी कौन है ना जो कुछ ले मत भी कहे काहे ले देखो पढिबा को जदी लॉ बोर लागस तो पढिबा को मत ले बोर लागे आ कोन लागछ थैंक यू सो मच स्विफ्ट रेजोल्यूशन माने कोन स्विफ्ट रेजोल्यूशन माने क्विकर सॉल्विंग हे मामा क्विकर सॉल्विंग तेरा फेवरेट परफ्यूम पेन आन चुकरा आन की सेल उपस किया जी सेल चबेनी रेस्ट म्यूजिक चल स्विफ्ट रेजोल्यूशन ऑफ वेरियस बिजनेस रिलेटेड इश्यूज तो जहां भी लायबिलिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज अछि सेडार एम कोन क्विकर रेजोल्यूशन हेबार अछि क्विकर रेजोल्यूशन ऑफ व्हाट जहां भी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स आसु सेडा क्विक रेजोल्यूशन हेबार अछि से कहे ना मोर मु दाई नै तू पूछे से कहे तू दाई नै से पूछियो इनी कथा जा ही पारियो एंड इन टेकिंग वाइज डिसीजंस टू एवॉइड अननेसेसरी रिस्क गुडा को कोन प्रिवेंट करिया पई वाइज डिसीजंस नै पारियर अछि fiduciary duties which ensure and secure that the directors of the companies always keep the interests of the company and its stakeholders above their personal interest एडा होची सबटो बड़ झूठ जते भी सैलरी दियो के ले तार निज इंटरेस्ट ऊपर स्टेक होल्डर इंटरेस्ट कंसीडर करिक रखि पारियोनी मैच करि पारियो से कहबी तोर जति की पर्सनल इंटरेस्ट ऊपर तो फोकस करछु प्लीज गिव एज इंटरेस्ट एज दैट टू द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट पॉइंट तो से कोन कहछि फिडुशियरी ड्यूटीज माने कोन फिडुशियरी माने बुझिलाने कोन कहलो ना इंदी कहचन कि नहीं ट्राई करि परियो स्टिल फिडुशियरी माने कोन से जदी कहिला जहा लेको तमे लेको तुम तो कहयो अछि फिडुशियरी माने कोन अरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड अच्छना सोई पड़ला मजे मजे उठिथे हैला कौन के वॉइस इज नॉट क्लियर कहछि व्हाट हैपेंड सुबुची ना सुबुनी जाओ निमो इष्ट बतन प्रॉफिट इंटेंशन टिके होबा सब मॉनिटर इंटेंशन टिके मिक्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स सेडा किछ टेंशन छाड़ ए fiduciary duties which ensure and secure that the directors of the companies always keep the interest of the company and its stakeholders above their personal my voice is clear or not tomar voice ne thank you so much के कोन कहउतिला प्लीज को एतरे या हम बुझछु छी नेटवर्क स्लो अछि देख देखो तू सब म्यूट करो सब इशिता प्लीज switch off the mic सुबुची या तमराला मते सुबुची that's right fine thank you तो प्लीज स्विच ऑफ द माइक ठीक अछि
तापर देखो ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज इम्पोज्ड तो एडा होचे तमरो लॉन्ग क्वेश्चन जहां भी पचारियो से एडा हम डिस्कस करियो तो ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज हैव बीन इम्पोज्ड ऑन द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी सब जिनसे जल्दी था the director of a company shall act in accordance with the article of association. Act in accordance with AOA. माने AOA जिंदी कोला सिंधी सुनियो. सुनना पिलाड़ा किन सुनियो. Article of association जिंदी कोची सिंधी सुनियो. The director of the company shall act in good faith in order to promote the objects of the company and for the benefits of the company. गुड फेथ कौन प्रमोट करियो ऑब्जेक्टिव्स प्रमोट करियो आ कौन प्रमोट करियो बेनिफिट्स प्रमोट करियो कार कंपनी रो ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स प्रमोट करियो एक्सरसाइज हिज ड्यूटीज विद ड्यू एंड रिस्पेक्टफुल स्किल एंड इंटेलिजेंस एंड शैल हैव एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट तो एटा होची कीवर्ड्स यू हैव टू राइट देम एति की जो पॉइंट जे कहनी एडा एज इट इज लेक्चर अछि एग्जाम रे यू कांट चेंज एनीथिंग तीनटा जे कीवर्ड लेक्चर अछि हमें चार्ट बनै लाड़ को लेखिबा एवं अंडरलाइन करो फर्स्ट करो. The director of a company shall not involve in a situation in which he may have a direct or indirect interest that conflicts or possibly may conflict with the interest of the company. तो कौन जल्दी गोटे कंपनी रो एमिति ऑब्जेक्टिव अछि जेमति कि इंश्योरेंस पॉलिसीज रे इन्वेस्ट करबो किंबा शेयर्स रे ट्रेडिंग करबो तर कंपनी रो ऑब्जेक्टिव होछ कोन शेयर्स रे ट्रेडिंग करे सी जाई कोन करछि गोटे सेमिनार अटेंड करछि सेमिनार अटेंड करि कि तार भाषण देछि कोन शेयर्स रिस्की शेयर्स रे तमे इन्वेस्ट करबानी शेयर्स टिके दूरे की रहबो तो से कोन से भूल करला से केस रे तो भूल करियार मीनिंग कोन भूल करियार अर्थ होचे एडी से जहां भी करला सेडा तार पब्लिक इंटरेस्ट ने बट कोन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से तो कॉन्फ्लिक्ट होच माने कंपनी रो ऑब्जेक्टिव होचे कोन शेयर्स प्रमोट करियार शेयर्स रे ट्रेडिंग प्रमोट करियार बट से जाई की कोन करला सेडी ता से तो कॉन्फ्लिक्ट करला तो he must not involve से कोन कहै छै involve in a situation which may have not involve which may have direct or indirect interest that conflicts or may possibly conflict with the interest of the company. Company रो जहां भी इंटरेस्ट सहित कोन करियो कॉन्फ्लिक्ट करिवो सिमिति जिंस रे से कोन इंडल्ज हे पारिबो सुबुची तापर देखो छी a director of the company shall not achieve or attempt to achieve any undue gain or advantage either to himself or to his relatives or partners or associates एति की होची गुटे पॉइंट से कोन होची डायरेक्टली किबा इनडायरेक्टली कागो प्रॉफिट हलाळे काम से करियोनी हैला निज निज प्रॉफिट किबा तार जहां भी चिन्हा परचे लोक जा अछंदी तार हेले प्रॉफिट हलाळे काम से करियोनी and if such director is found guilty of making any undue gain he shall be liable केते amount को equal to the gain of the company this is the question but एडा क्वेश्चन आसीथिला जदि सी प्रॉफिट करथिया भाबरे जदि के देखि दैछि ताकू हैला जानि देले कि से पर्टिकुलर जिंस को धरि कि भूल करथिला आ प्रॉफिट ता उठेव चेष्टा करथिला तो से केस रे कोन हबो से केस रे से कंपनी को सेति की अमाउंट ऑफ मनी पठेयर अछि कि दबार अछि जेति की अमाउंट ऑफ प्रॉफिट से अनड्यू इन्फ्लुएंस रे करूथु बुझना इक्वल अमाउंट a director of the company shall not assign his office and any assignment so made shall be void तो तार कामडा आ जण को बते पारियनी आ जण को ट्रांसफर करि पारिबो क्लियर तो फर्स्ट लेखो केतरा अछि हमर टोटल 6 अछि तो 7 मार्क्स में 50 थाउची जनरली ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ड्यूटीज एंड liabilities duties and liabilities of directors as per companies act अच्छा एति के अगर ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज अछि कि बहुत किछ अछि बट स्पेसिफिकली जतो कोई कंपनी एक्ट कोन होछि कि तमे लिखिया पे बात सेति में स्पेशली लिखि कि as per companies act first लेखो act in accordance with
companies companies AOA companies AOA तापर कीवर्ड्स केमती लिखुची देख तुम एग्जाम रे मध्ये एमती फॉर्मेट रे लिखि पारियो बहुत भलो इंप्रेशन हबो लेख act in good faith act in good faith in order to promote in order to promote objectives of the company in order to promote objectives of the company objectives of the company benefits of the company benefits of the company promote करला माने कोन कंपनी को किनि बेनिफिशियल हे पारे गोटे सिचुएशन रो जदि गोटे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आसिला बुझिला ना से डिस्कस करिया दरकार नै का सहित से तार ड्यू डिलिजेंस अप्लाई करगी से इन्वेस्टमेंट रे अप्लाई करले जदि पैसा आसियो कहि कि ताको जाना पड़छ तो से आराम से कोन करि पारियो काहे कि एथरे कंपनी रो बेनिफिट ता अछि कहि तो बेनिफिट्स ऑफ द कंपनी सेड थर्ड पॉइंट कोन स्टेक होल्डर इंटरेस्ट तीन में से कीवर्ड्स मस्ट रखिया स्टेक होल्डर इंटरेस्ट इनदि लेखियो बहुत भलो मार्क अच्छा एग्जामिनर को जेते इजी हबो आंसर पढिबार तमरो सेते भलो मार्क आसीबो दिस इज द गोल्डन रूल हां चार्ट करियो तमे जानि पछ ना गुड जिंस लॉ रे पिलाने एलाबोरेट करके लेखु छंदी दैट्स व्हाई कोन टिके चांसेस अछि मार्क कटिया पे बट जेतोर तमे कम करके चार्ट करके लेखिबो त ताकू बहुत प्रोफेशनल लागियो सेना स्पेशली इमिति लेखुछ से पैराग्राफ ता लेखिया रे एमति लेखिया बहुत फरक अछि ताकू जेते इजी होबो करेक्शन करिया पे सेते भलो मार्क तमको दबो तमे ट्राई करि परियो आराम से काई गेले कहले आमे गुथर रे पास हेतिया पिला नै बहुत थरे फेल हिची फाइनल कथा म कहूछ फाइनल मोर फोर्थ अटेम्प्ट रे हैला तो एते थोरे तो मोला लॉ आगा दोथिली ना लॉ तो म दोथिली आगा जिन देले ग्रुप 4 तो मोर हेला फर्स्ट बट ग्रुप 3 रे जे तो मोर लॉ थिला बहुत थरे म दोथिली ट्राई एंड टेस्ट को जिंस को धरी भूल होतला पास्ट एग्जाम रो जहां भी आंसर शीट रो रिव्यू वीडियो जा था होची YouTube रे यू कैन गो थ्रू दैट से कहिबो कि पॉइंट वाइज ये भी लिखुची सेडी मार्क फेच हे पारुछ तो मो से जिंस रे इंप्लीमेंट करली तो मोर सेडा हैला लास्ट अटेम्प्ट रे जतोळ मोर हैला आगरे मो एमते लिखिथिबे तो मु के कया कथा कहूनी मते जहां भी हेची मु से जिंसडा एक्सप्रेस करछ फाइन ओके नेक्स्ट पॉइंट गासो director shall shall exercise shall exercise his duties with due and reasonable care एडी दिडा कीवर्ड्स आसला हम अगेन बाइफरकेट करछु से जिंसडा तमे एदर सब जिंस जगह एपडी डिग्री लिखि पारियो नाले सब जिंस जगह एमती तळा आडर लिखि पारियो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैनर रे किबा हॉरिजॉन्टल मैनर रे भी लिखि पारियो इट्स अप टू यू जदि चारटा तीनटा रु अधिक पॉइंट अछि तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रेफर करो नाले हॉरिजॉन्टल प्रेफर करो एमती जिंदी लिखिनो तो मु प्रेजेंटेशन ता सिखौची एडी कांगेले पॉइंट्स तमे ऑलरेडी बुझि जेइछो तो वी आर ब्रेकिंग इट इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन plus skill and diligence skill and diligence and shall exercise independent judgment and shall exercise independent judgment and shall exercise independent judgment
and shall exercise independent judgment. Clear? बुझिलो कौन कौन कहि से हमें इजीली पढ़ी पारछु तार ड्यूटी जहां पे अछि ड्यू एंड रीजनेबल केयर. ड्यू एंड रीजनेबल केयर रो मीनिंग कोन एकदम आराम से बुझिगिरी एंड केयरफुली से जिनसडा करियो. देन कोन कहछि स्किल एंड डिलिजेंस. सेकंड पॉइंट स्किल एंड डिलिजेंस माने कोन जेति कि भी स्किल सेडी एसेंशियल अछि तते के कहया दरकार नै. यू हैव टू अप्लाई. डिलिजेंस माने कोन कंप्लीट इंटेलिजेंस टा यूज करिकी. बुझला मो वर्ड्स रो मीनिंग बारंबार कहछि काहे कि तमे तमरो जहां भी इजी वर्ड्स तमे लिखियो ताकि एडा मन रखियो कहि. मो अगेन कहि दोछि कीवर्ड्स न लिखले से मार्क दबोनी. तमो लागु छै एडा जति एते इजी क्वेश्चन डा से काहे कि पचरियो आ पिला माने मार्क कोन पे कटुछि 6 मार्क्स 7 मार्क्स पे एते इजी क्वेश्चन से कोन पे पचर छै पूरा आराम आराम से पचर दउ छै. काहे कि कीवर्ड्स के ले मन रखु नांदी जहां भी सिंपल बीकॉम लैंग्वेज रे लिखु चंदी आंसर तो ठीक अछि बट तार क्राइटेरिया मैच न हला जे से मार्क दबोनी. लॉ रो फेल हला परे बुझिबो कि कोन पे हला काई हला कहि कि कांदिया रो भलो आगरे टिके केयरफुली रहि सिया कहउछि ना केयरफुल ड्यू एंड रीजनेबल केयर. बुझि पारछ ना इजा सब होछि रीजन. एंड शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट. इंडिपेंडेंट जजमेंट माने कोन तार जदी किछि रिलेटिव सेडी अछंदी तांको लागि किछि भूल हेछि तो इंडिपेंडेंटली से तांको साइड न नेगिरी ता निज साइड न नेगिरी कंपनी साइड भाबिगिरी कहन कंपनी साइड न नेगी रिलेटिव साइड न नेगी निज आड भाबिगी गोटे इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करे अछि. बुझि पाला दिस इज इंडिपेंडेंट जजमेंट. देन नेक्स्ट पॉइंट कोन आछि हमरो एटा जो इंपोर्टेंट पॉइंट कहथली केस लॉ पॉइंट shall not involve in any situation shall not involve in any situation which may directly or indirectly second conflict or possibly conflict or possibly conflict माने डायरेक्शन ऑफ conflict ऑब्जेक्टिव को धरकी केबरे केबे तो conflict हेई पारे माने डिसबैलेंस हेई पारे तीन चार भितरे तो कोन करी आमे with the रो सिमती नहीं एमती लिख with the interests and objectives of the company with the interests and objectives of the company. देखो ए पॉइंट रे आ गोटे जिंस तुमको रिवील करछि सेटा होछि तमर कीवर्ड्स को धरि की आ एक्स्ट्रा वर्ड्स तुम लिखि पारे. कीवर्ड्स थिला पर तुम एक्स्ट्रा गुटे दिरा वर्ड ऐड करि परिबो. देखो मु एबे जिंदे ऐड करछि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी. बुझि पारछ ना तो ऑब्जेक्टिव्स ऐड करले मु एडी तो सेटा टिके आउ टिके भल लागिला से पॉइंट को तो एमिति वर्ड्स तुम ऐड करियो बट कीवर्ड्स का मैंडेटरी. तापर लेखा कौन पे वे कौन आसी गन शूट कर इयरिंग्स लग गया से स्पॉट टा डिसाइड कर कोडी लग गया. shall not achieve shall not achieve or attempt to achieve shall not achieve or attempt to achieve any undue gain or advantage either कितना पॉइंट से कुछ देखो himself either to himself अब हम
relative or add करियो relatives, then partners, associates, then associates or कौन कही ठीक अच्छे एतिया कही एतिक रहिला हमर फर्स्ट पॉइंट रे man shall not achieve or attempt to achieve any undue gain advantage to कौन himself, partners, relatives, associates चार जण जदी इनती करला बेलू ताको जदी धरा पडियाला तो कौन हबो he has to pay an amount equal to the amount of undue gain he has obtained तो एडी लेखा penalty in case of discovery of fraud, in case of discovery of the fraud, he has to pay an amount equal to the amount of undue gain obtained amount of undue gain obtained बुझी पाला लास्ट पॉइंट देखो बजेला इच्छा होती है बोतल टा धरी मुंह पर भोग पड़ दो तापरे कोन से टिके अलसुआ हेकरी तार ता कामडा ताको कहि पारियनी तमन कोते ताले कहि पारियनी ता कामडा असाइन करियनी किछि कर पारियनी shall not assign his office माने कौन डेजिग्नेशन ऑफिस माने कौन दे दो ऑफिस दे दो ना कौन his designation or any assignments and anything done as such shall be void बुझी पाला एतिक रहला कोन हमर ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज तो एमिति प्रेजेंटेशन दा हुए at least I used to do this way because आगे अब बुझी पाला देखो लास्ट टॉपिक सानोला डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर no person shall be appointed as a director of the company unless he has been allotted a director identification number तो din हमर स्कूल रे जे आइडेंटिटी कार्ड ता दिया होची सिमती कोन हमर din नंबर ता दिया होची और अदर सच नंबर as prescribed under section 153 तो आरो सेक्शन नंबर होची 153 तो एटा किए दबो ना सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करछि ए जो din नंबर बिसरे every individual intending to be appointed as director shall make an application for the allotment of din number जति कर इंटेंशन अछि डायरेक्टर हेबा पई तो कोन करे सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करियो din number पई in such form and manner along with such fees as prescribed the central government will prescribe any other identification number as din number तो एटा किछि नै डायरेक्टर जे भी हेबा चाहछि तो ताको din number is mandatory आ जो भी पर्सन इंटेंशन अछि डायरेक्टर हेबा पई से कोन करियो din number पे अप्लाई करियो सेंट्रल गवर्नमेंट को along with prescribed fees ठीक अछि
Thank you.